Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today inshallah we will solve uh, Feb March paper of 0478 computer science that was held in this year 2022 in the month of Feb and March. This is a very important paper for the students who are going to appear in summer 2022 paper. Now we know that our computer science paper consists of 75 marks, 1 hour 45 minutes, and the questions are set from all chapters of our syllabus. The first question in this syllabus is from chapter number 1. It says that a computer stores data in binary form. Binary number can be represented in binary numbers. Binary numbers can be represented in binary numbers, and you are asked to convert 8-bit binary number to 01010101 to binary. They have given a working space, so we will convert these number over here, and then we will write down the result at the top in this space 01010101. So we are asked to convert into binary. We use binary place values, binary place values. These are 1 2 4 8 16 32 64 and 128. We ignore the number which are under zeros and add the remaining numbers, means 64 plus 16 plus 4 plus 1. So it will be 85. 64 and 16, 80, 80 and 4, 84 and 1, 85. Then we have another question in which we are asked to convert a binary number into hexadecimal number. To convert a binary number into hexadecimal number, we divide the number into nibbles. Nibble means 4 bits. We know that 0 and 1 are known as bit, and 4 bits make a nibble. Here we have two nibbles, 11000000. We write down 1248 1248. 8 and 4 12. 12 means C and 0. So our answer will be C0. Now in the next part C, convert hexadecimal 1A into denary. To convert a hexadecimal number into denary, we can convert it into binary and binary into denary. Here A is given, we need to note down the value of A. A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, and E is 14. So 1A. Firstly, we convert this into binary. We write down 1248, 1248. 1 and A is 10 means 8 plus 2. Then we convert these number into binary. 1, 2, 4, 8, 16. 16 and 8. 16 and 24, 24 and 2, 26. It says that binary numbers can be stored as bytes. State how many bits are there in one byte. We have studied that 0 and 1 are considered as bit. 4 bits make one nibble, and 8 bits make one byte. As we are asked to convert it into how many bits are there in 2 bytes. In 1 byte we have 8 bits, so in 2 byte there will be 16 bits. Now the second question, Nadia creates a digital image for a school project.
Give one example of image format. We have different image formats like JPG, PNG, BMP. Uh, so we can use we can write down any of them. So I am writing here, we can write down JPG, PNG, uh, anything can be written. So I am writing here JPG. Now, describe how a digital image is stored. Yes, friends. Now you can see that this is a digital image. Basically, this image is divided into smaller parts. Each part of the image is known as each part of the image is known as pixel. Pixel means picture element. And for each pixel, we store the binary value, and each pixel is used to represent a single color. So the image is divided into smaller parts. The smaller parts of the image is known as pixel, and then each pixel has a binary value that is representing the color, and in each pixel we can store only one color. This is the way that we store image. So if you are asked to write down how digital image is converted into uh, are stored in computer. So firstly we write down that image is image is digital image is turned into pixels, right? Pixels are picture elements, right? Acha. the number of pixels the number of pixels decide the picture density. The number of pixels decides the picture density, means the quality of the image. Then each pixel is given a binary value representing color stored in it, right? A pixel can store one color at a time. One color. The number of available colors, yeah, means color depth, depends upon number of bits per pixel. Depends upon number of bits per pixel. Bit depth. Right, bacho? Now, what we have studied that a digital image is turned down into pixels. Huh? Uh, and pixels are picture elements. The number of pixels decide the picture density. Each pixel is given a binary value representing color stored in it. A pixel can store one color at a time. Can store one color at a time. One color. The number of available colors depends upon the uh, bit depth, right? And all pixels are form a grid, like we have seen. All pixels
form a grid. There is a grid of pixels and stored in sequence in file. You may observe here that this picture is divided into pixels, and each pixel is given uh, a binary value, and these binary values representing the color. For example, for white we have written 111, for red we have written 110, or for yellow we have written 110, for red 100, and for green 010. Right, students? Then the next part, okay, this is 3 mark question, so you need to write down at least 3 points. Then the next part state what is meant by data compression. Data compression means reducing the file size. Whenever we use the term data compression, means we are reducing the file size. The process of reducing file size is known as data compression. Right? The process of reducing file size is known as data compression. Then the next part of the question says explain why Nadia compresses the detailed image before image file before emailing it. So if we have compressed an image, so it will occupy lesser space on disk and it will be transmitted quickly and it will consume lesser internet data. Compressed compressed image compressed image file transmitted quickly using lesser internet data. Now the second part, the third part of the question is Nadia's email service uses parity bits as a method of error detection during the transmission. Describe how the parity bits are used to detect errors. Huh? Here we are asked to describe how parity bits are used to detect errors. ठीक है बेटा? So here you will write down all the steps which are used in parity check. Firstly, an additional bit is added in each byte, making number of ones even or odd as per decided, right? And then the data is transmitted. Receiver receives the data, counts the number of ones in the data in each byte. If number of ones matches with the parity, means in odd parity if number of ones are odd, or in even parity number of ones are even, then it will ensure that the data is correct. And if they don't match, it means there is an error in data transmission. You need to write down all these things for 5 marks, right? So in for 5 marks, firstly we will write down how parity works. What will we write? We write down uh, a parity, an even or odd parity is decided before uh, transmission. The number of ones in each byte is counted and 0 or 1 is added in each byte to make
number of ones, even or odd, whatever is decided. ठीक है बेटा? The data is transmitted bytes are transmitted. Receiver receives. On receiving, bytes counts number of ones to check are they match with the decided parity. For example, in even parity, if a byte has not even number of ones, then there will be then there will be an error during data transmission. ठीक है बेटा? So this is the way that we detect errors. Now, अच्छा बच्चों, it says identify and describe one other method for 4 marks. अब we have studied that we have error detection methods. We have error detection method during data transmission, and we have error detection method during entry. Error detection methods. These are also known as verification. We have 6 methods. What we have studied that at data entry, we use parity check, double entry, and visual check. And on data transmission, we have parity check, we have echo check, we have ARQ, we have checksum. So you may write down any of them. For example, you are writing ARQ. So you need to describe the process of ARQ. Right, bacho? We have studied that in ARQ we use an acknowledgement and timeout method. ठीक है? So what we do in ARQ, in automatic repeat request, timeout and acknowledgement is used to detect errors. Right? Acha, what we do, how it works beta? Sender sends data and start a timeout. Receiver receives data, verifies it, and send acknowledgement
before timeout, right? If sender doesn't receive acknowledgement during timeout, it will send another copy of data and starts a new timeout. This process continues until sender receives an acknowledgement within timeout. Right, बच्चों? This is the method. Huh? Now, here, the question number 3, 3-mark question is that you are asked to take, right, when you will obtain an output of 1. If A is 1 and B is 1, AND gate. AND gate says that both are 1, then output is 1. Here both are 1, so output will be 1. OR gate says if either is 1, output is 1. Here we have 1. NAND gate says if both are 1, then output is 0, so it will not be ticked. NOR gate says if either is 1, output is 0, so it will not be ticked. XOR gate says if both are different, then output is 1, so it will not be ticked. Now A is 0, B is 0. In AND gate, both are 1, then output is 1, so this will not be selected. OR gate says if either is 1, nothing is 1. NAND gate says if both are 1, then output is 0, otherwise output will be 1. So in 0, A is 0, B is 0, output will be 1. NOR gate says if either is 1, output will be 0. Here no one is 1, so output will be 1. XOR gate says if both are different, no, both are same. Now A is 1, B is 0. AND gate says both are 1 to be 1. तो ये भी नहीं होगा. OR gate says either is 1. Okay. NAND gate says if both are 1, then output is 0, otherwise output is 1. Okay. NOR gate says if either is 1, output will be 0. XOR gate says if input are different, here input are different. ठीक है बच्चों? Then it says A is or B and B or not C. So firstly we draw A is or B. We have drawn this part. Then we will draw that part. It says B or not C. So we will apply a NOT gate on C and we connect them using OR gate. Right? Then both of them are connected with each other using AND gate. कलर अजीब सा हो रहा है. Yes, yes, it's okay. ठीक है बेटा, ये हो गया 4 मार्क का क्वेश्चन. 4 gates are there and 4 mark question. Now, Pardeep uses personal computer to complete work at home. Pardeep uses a mouse and a keyboard to control the computer. Complete the description of the principle of operation of a mouse and a keyboard. This will be very important for your exam. You need to memorize these. हाँ, तो आप यहीं से क्या कर लेना, इसको memorize कर लेना. ठीक है बेटा. So it says that an optical mouse shines a red light from a dash underneath the mouse. In optical mouse we have LEDs.
ठीक है बेटा, देन द लाइट रिफ्लेक्ट्स back from a surface through a lens in the mouse and is converted to a value. The value is transmitted to the computer. The computer then determine the dash and dash of the movement. तो ये क्या करेगा, ये डिटरमिन करेगा स्पीड ऑफ द मूवमेंट एंड डायरेक्शन. स्पीड एंड डायरेक्शन. Yes, बच्चों. The next part is related to keyboard. In keyboard, when a keyboard user presses a keyboard on a key on a keyboard, the key pushes the circuit. होता क्या है कि कीबोर्ड के अंदर सर्किट बने हुए होते हैं अंडर ईच की. हाँ, तो स्विचेस बने हुए होते हैं और स्विचेस कनेक्टेड होते हैं सर्किट से. तो ये क्या करेगा, स्विच को पुश करेगा. ठीक है, दिस कंप्लीट द सर्किट, और ये क्या करेगा, इसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. Signals are sent to computer. The computer uses the data to calculate which key was pressed. Then you are asked to input two other devices. तो कीबोर्ड और माउस आपने ले लिया है. You may use microphone, you may use digital camera, you may use scanner. ठीक है बेटा, तो आप स्कैनर लिख लो एंड माइक्रोफोन लिख लो और एनी अदर वॉट एवर यू आर राइटिंग. अच्छा बेटा, then the next part. In the next part it says that Pardeep uses a projector attached to the ceiling at his home to watch high density films. अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि the projector has broken, he want to buy a replacement, he needs to choose between LCD and DLP. अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बताना है कि why. अच्छा, ये क्या कह रहा है कि why LCD and would be more appropriate for Pradeep. अच्छा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हेयर यू नीड टू कंपेयर. अब ये एलसीडी प्रोजेक्टर का और डीएलपी का आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन योर एग्जाम दे में आस्क यू टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ दीज प्रोजेक्टर. तो अब आपके लिए ये प्रोजेक्टर भी इंपॉर्टेंट हो गए. अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कीबोर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, माउस इंपॉर्टेंट हो गया और प्रोजेक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए. अब आपको इनके बारे में आपको इनको याद करके जाना है. ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया वो आपके लिए. ठीक है, अब क्या बात हो रही है, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि वाई डी एलसीडी इज मोर इज बेटर देन डीएलपी. अच्छा बेटा, डीएलपी इज न्यूअर वर्जन. हाँ, एलसीडी पुराने वर्जन थे, बट अगर हम देखें तो हमें कुछ चीजें एलसीडी के अंदर बेटर मिलती हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स के अंदर बेटर मिलती हैं डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर के अंदर से अगर कंपेयर करें. एलसीडी प्रोजेक्टर्स की जो इमेज होती है वो शार्पर होती है. ठीक है, और इसके अंदर बेटर कलर डेफिनेशन होती है. ठीक है, और तीसरी बात ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं. और चौथा पॉइंट इनके अंदर ये है कि ये हीटअप भी कम होते हैं. तो व्हाट यू विल राइट डाउन, यू विल राइट डाउन LCD projectors, LCD projectors give sharper image, they have better color definition, ठीक है बेटा, they are energy efficient, and they generate lesser heat. ये इतने हीटअप नहीं होते जितने आपके नए प्रोजेक्ट होते. अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रदीप स्टोर्स his collection of films and his work files on his personal computer.
Pardeep wants to save a copy of all his films and files onto a single. अच्छा ये कह रहा है कि सिंगल स्टोरेज डिवाइस. अब सिंगल स्टोरेज डिवाइस का मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट यूज डीवीडी, सीडी, ब्लूरे, यू कैन नॉट यूज यूएसबी फ्लैश मेमोरी, क्योंकि यूएसबी फ्लैश मेमोरी की स्पेस भी कम होती है और डीवीडी सीडी की स्पेस कम होती है. कह रहा है कि इसको एक स्टोरेज चाहिए जिसके अंदर वो कैन इट कैन ही कैन स्टोर द डेटा. तो अब इसके लिए बेटर ये है कि आप इसको एक्सटर्नल एचडीडी और एक्सटर्नल एसएसडी की बात कर लें, ठीक ना. अच्छा, इनमें से दो में से किसी एक को आप क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, एक्सटर्नल एचडीडी और एक्सटर्नल एसएसडी, वॉट एवर यू थिंक. हाँ, जो भी आपको बेटर लगे तो आप इसको कर लो. अच्छा, तो आई एम राइटिंग एक्सटर्नल एचडीडी. ठीक है बेटा, अब इसकी आपको जस्टिफाई करना है 3 मार्क के लिए. तो 3 मार्क के लिए आप, अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा एसएसडी भी ले सकते हो. अगर आप एसएसडी लेते हो तो उसके अंदर क्या होगा, एसएसडी. ठीक है. अच्छा, एसएसडी के अंदर ये होगा कि ये कॉम्पैक्ट होती है. एसएसडी के अंदर ये होगा कि ये एनर्जी एफिशिएंट होती है. ठीक है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो इसको जर्क लगने का इशू नहीं है. हाँ, ये डिस्क के अंदर बैट सेक्टर आने के इश्यूज नहीं है इसके अंदर. ठीक है ना. और इनकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है. हाँ, इनका रीड राइट साइकिल भी क्या होता है, रीड राइट साइकिल कम होता है लेकिन इनकी स्पीड ऑफ रीडिंग राइटिंग फास्टर होती है. तो फर्स्टली तो आप ये लिखोगे, इट हैज storage in terabytes. So collection of movies and work files can be stored in them easily. ठीक है बेटा, एक तो ये इशू हो गया. अच्छा, दे आर पोर्टेबल, दे आर एनर्जी एफिशिएंट एंड कंज्यूम्स, एनर्जी एफिशिएंट है. दे डोंट हैव a moving part, so which increase their durability. ठीक है बेटा, तो ये इनकी ड्यूरेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज देर इज नो मूविंग पार्ट. ठीक है. अच्छा भाई, और आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, यू नीड टू राइट डाउन एटलीस्ट 3 पॉइंट्स. हाँ, इट हैज स्टोरेज इन टेराबाइट्स हो गया. अच्छा, एनर्जी एफिशिएंट भी हो गए, मूविंग पार्ट नहीं है, दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज. देयर access speed is faster than other storage devices. ठीक है भाई, और इनकी एक्सेस स्पीड भी फास्ट है, एचडीडी की एक्सेस स्पीड स्लो होती है. अच्छा भाई, अ हॉलिडे कंपनी हैज अ वेबसाइट वेयर कस्टमर्स कैन स्टोर accounts and create accounts and can book and pay for holidays. ठीक है. The website is written in HTML. Give two examples of HTML structure and presentation. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है related to structure and presentation. स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, तो सेमेंटिक पार्ट ऑफ द वेबसाइट होता है. इसके अंदर वेबसाइट का लेआउट होता है, वेबसाइट का जो कंटेंट है वो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है. वेबसाइट का लुक, हाउ इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. हाँ, लाइक बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, इमेज अपना फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, हेडिंग स्टाइल. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू
a presentation. So you will write down these points, right बच्चों? So for the presentation, ठीक है भाई, क्या लिखेंगे भाई हम? What will we write? Structure means semantic part of website, contents of the website. दूसरा क्या है भी? नंबर 2 है लेआउट ऑफ द वेबसाइट, कि कहाँ पे कौन सी चीज आपने पेस्ट की होगी। हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा? बैकग्राउंड कलर, ठीक है, फॉन्ट साइज एंड कलर, ठीक है, ये सब क्या है आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट। अच्छा, नाउ it says that the website is stored on a web server. The customers use their own computer to access the website. अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आईपी एड्रेस एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस आर थ्री टाइप ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय वेब कंप्यूटर्स व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट। हाँ, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि गिव टू फीचर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ द एड्रेस इन द टेबल। ठीक है, अब आपको यूआरएल के फीचर लिखने हैं, आईपी एड्रेस के और मैक एड्रेस के फीचर लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो यूआरएल क्या करता है बेटा? यूआरएल इज द वेब एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, इट कंटेन्स प्रोटोकॉल्स, डोमेन नेम एंड फाइल नेम। हाँ, ये तीन फीचर होते हैं इसके अंदर यूआरएल। ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या होता है? ये 32 बिट का होता है, ये लोकेशन ऑफ द डिवाइस सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये 4 ग्रुप ऑफ डिनेरी नंबर रेंजिंग फ्रॉम 02 to 55 के अंदर रिप्रेजेंट होता है। मैक एड्रेस जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिवाइस है। तो हम क्या कहेंगे भाई, इसके फीचर आपको क्या लिखने हैं? यू नीड टू राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द वेब, दिस वन, राइट? सो व्हाट विल वी राइट? URL is the web address of website. It consists of protocol like HTTP, domain name like www.inqilabpatel.com, and file name and sometime file name like OLEVEL notes.pdf। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका यूआरएल। आईपी एड्रेस को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस is the location of devices over internet, over network. It is given by ISP or web hosting company। वो है ना, आपकी वेबसाइट है तो इसलिए वेब होस्टिंग कंपनी देगी। राइट बेटा, और राउटर। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ, ये आप इसको छोड़ दें, आप लिख दें इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज 32 बिट लॉन्ग, represented in 4 groups of binary numbers. Each group ranges from 0 to 255
and separated by dot. For example, 120.200.75.90. अच्छा, मैक एड्रेस is the identification of device over network. ठीक है बेटा, मैं आईपी एड्रेस क्या कर रहा है, लोकेशन बता रहा है, और मैक एड्रेस क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन बता रहा है. आईपी एड्रेस इज लाइक योर नेम, सॉरी, आईपी एड्रेस इज लाइक योर लोकेशन एंड मैक एड्रेस इज लाइक योर नेम. आप कहीं पर भी जाओगे तो आपकी लोकेशन चेंज होती रहेगी, बट द योर नेम विल नॉट बी चेंज, राइट. अच्छा, इट इज 48 bit long, right? It is 48 bit long, represented in 12 hexadecimal digits. MAC addresses are issued by manufacturer of network interface card. For example, A1 dash 00 dash B3 dash 89 dash 45 56 dash BB FF. Yes, bachcho. The C part says that the company is concerned about threats to its web server. Complete the table by identifying two potential threats to its web server, the impact each threat could have on the company, software the company can use to help to limit the each threat. ठीक है बेटा, तो अब आपके पास एक थ्रेट हो सकता है कि वायरस आ जाए आपके वेब सर्वर पर. इससे आपके वेबसाइट का डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, और आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो यूजिंग एंटीवायरस. एक हो सकता है कि आपके ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विसेज का अटैक हो जाए. ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा कि फ्लड ऑफ फेक विजिटर्स विल बी sent to your website and you cannot give services to your real users. और इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इंस्टॉल कर लेते हैं फायरवॉल. so we can use any of them. तो I am whatever you think, तो आप यूज कर सकते हो. एक बहुत रेंज है इस क्वेश्चन के आंसर की. सो बट आई एम राइटिंग वायरस. ठीक है, तो अब वायरस आप लिखोगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इसकी इससे क्या होगा भाई. वायरस क्या करेगा, में करप्ट वेबसाइट डेटा, स्लो डाउन द वेब सर्वर. ठीक है, ये कर सकता है वायरस. अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, यू नीड टू इंस्टॉल हाँ हाँ बेटा, हम क्या करेंगे इससे बचने के लिए, वी विल इंस्टॉल एंटीवायरस. अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास दूसरा है, आ, हमने क्या कहा था, डिनायल ऑफ सर्विसेज.
इसके अंदर क्या होता है बेटा, a flood of fake requests are sent to the web server and and resulting and web server become unable to provide services to real user. इससे बचने के लिए what we need to do, we install firewall. ये firewall हम इंस्टॉल करेंगे तो हम इससे बच जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हम मेथड यूज करते हैं, ये दोनों। राइट बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट योर पेपर। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे इसमें देख लेना। यू शुड practice these papers. I will upload these paper on my web server. You may download it from there and you may use it. Huh? The address of the web server is my website's address is inqilabpatel.com, and you may find this at O-level past papers, P1 past papers. Okay, bachcho. That's all for today. See you next time, inshallah.